Namaskar and welcome to the session. The much coveted, much desired GS paper 2 has come. सबुठारु हमर जेटा फेवरेट पेपर जोतरे पिला माने अधिका स्कोर करंती एवं रैंकिंग असिस्टेंट मको कहे इट हेल्प्स यू टू सिक्योर ए गुड रैंक GS पेपर 2 पॉलिटी गवर्नेंस सोशल जस्टिस इंटरस्टेट रिलेशन ऊपर क्वेश्चन लेवल जोटा आम देखा क्वेश्चन लेवल जो कथा होची एटा प्रॉपर्ली यूपीएससी ओपीएससी पैटर्न रही क्वेश्चन बहुत माने जो जंती एग्जाम ओरिएंटेड थिला बेले आम कहि परिबा कारण मो सब बेले भी कहि तुमर वाईटी सेशन रे हमर ये रे कि एबे एनालिटिकल कांसेप्ट रे क्वेश्चन पड़िबो स्टैटिक क्वेश्चन रो दिन गलानी भारी तेणु तुमको थिंकिंग एबिलिटी डेवलप करिकी एनालाइज करिकी लिखिया पड़िबो तो एक्जाक्टली सही पैटर्न होइछि ओके आरंभ करिया पूर्व कहि दी कि जते भी क्वेश्चन आछि जो पैटर्न एक्जाक्ट अछि बा तो जो हमर अछि कोन 12टा जो 15 मार्क आउ जो 5टा अछि जो 20 मार्क रो क्वेश्चन सेमती पैटर्न रे ए वर्ष कमिशन करिसंती तेणु सेम पैटर्न मेंटेन होइछि रेलिवेंट अछि तार प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट ऊपर बेस करी जहाँ भी डेवलपमेंट होइछि तारि ऊपर क्वेश्चन प्रायतः आसीछि पॉलिटी रिलेटेड एवं गोटे सबुठारु गुरुत्वपूर्ण कथा आप मानू मु कहउ चाहूछि कि हमर आंसर राइटिंग बैच आउ पेड बैच रे जो पैटर्न रे मु स्पेशली ताकू ट्रेन करोछि तुमे जदि कोनोसी पेड बैच बिला से कांटेक्ट पाउछ बा हमर बैच रे जो माने पढुछंती तांको पचारि परिबो कि आई एम हैप्पी टू डिक्लेयर I'm not taking pride in myself, but I'm happy to declare that I'm following the right pattern and teaching the students right way so that they're getting benefits at the time of examination, because the ultimate objective of a teacher in civil service examination is to enable the student, enable the aspirant to write something in the paper. I hope that those who have been taught under me must have written something more than others. Thank you very much. Welcome to the session. आरंभ करिया OCS Mains 4th February रो पेपर टा ठीक अछि ता पूर्व as usual द ग्रेट डिप्लोमेट चाणक्यकर गोटे बढ़िया कथा मोर मने पड़े समटाइम्स यू हैव टू सफर इन लाइफ नॉट बिकॉज यू वर बैड बट बिकॉज यू डिड नॉट रियलाइज वेयर टू स्टॉप बीइंग गुड बेले आमे सफर हो कि आमे खराब लोक बोली नुह आमे कोठी भलो हबा को बंद करिया दरकार हम से जानि पर अति भलो होइतिलु सेति में हम सफर हेलु okay so that is a very good thing to learn and मुझे सब रखुची angry correct emotional intelligence आमर रहिवा दरकार ethics पेपर आगु आसी emotional intelligence रखिया दरकार right person right way right direction ठीक लोको को ठीक लोको को सहित रागिबा ठीक पर्पज रे रागिबा ठीक डिग्री रे रागिबा ठीक समय रे रागिबा ये जो कंट्रोल इमोशन रो कंट्रोल करिबा ये गोटे एजुकेटेड लोक स्पेशली सिविल सर्वेंट रो गोटे बड़ काम कि ही हैज टू हैव इमोशनल इंटेलिजेंस एटा इमोशनल इंटेलिजेंस कहंती अरिस्टोटल को फेमस कोट ओके आरंभ करिया तले क्वेश्चन ओके ता पूर्व एज यूजुअल आई एम शोइंग यू आवर बैचेस वन ऑफ द बैचेस होची फाउंडेशन बैच प्रारंभ जोथरे आपन मन को प्री मेंस आउ इंटरव्यू रो गाइडेंस रहिबो जोथरे कि मु पॉलिटी और एथिक्स रो गाइडेंस नेबी तो से पेपर इंग्लिश एसेटा भी मो गाइडेंस रे अछि आ कंपलसरी इंग्लिश तो मु पाखा भाई 3टा 4टा पेपर एरिया को कवर करूची आई होप कि यू ये दैट एवं एटा टोटल प्री मेंस इंटरव्यू अछि एतरे क्लासरूम पीडीएफ रहिबो एवं अन्य सब रहिबो केवल ऑप्शनल को छाडी के अन्य फ्री इंटरव्यू अछि जो माने क्वालिफाई करिवे तांको पे फ्री इंटरव्यू सेशंस अछि एवं एटा बैच ऑलरेडी जस्ट आरंभ होइছে এবং এটা বিজয় ব্যাচ দ্যাট ইজ ফর ইওর হোয়াট দ্যাট ইজ ফর ইওর প্রিলিমিনারি এন্ড দ্যাট ইজ এটা যে জুন মাসের যে প্রিলিমিনারি তা পই টার্গেট করছি এটা কেবল প্রিলিম ওরিয়েন্টেড এমসিকিউ ওরিয়েন্টেড এবং থিওরিটিক্যাল পারসেপশন ক্লিयर करियो एटा बैच अपन परचेज करि परिबे आडा स्टोर को जाई आडा स्टोर को जाई कि ओपीएससी बा ओडिशा एग्जाम स्टेट एग्जाम रे जाई कि ओडिशा को जाई कि तापर ओपीएससी रे क्लिक करे बैच आसीबो and price बहुत nominal अच्छी एवं किल्ला बेले you can use my code Y963 यूज कले you can get more discount Y963 आउ थरे मु कोड टा टी पॉपुलराइज करियो चाहूची नहीं कि Y963 यूज कले तुमे अन्निका डिस्काउंट पर दैट इज माय कोड ओके सो ऑल द बेस्ट एंड जो माने भी पके नांती जो माने फॉर्म फिल अप करि नांती सो माने निश्चित भाବରେ बदे माने सरी जीव डेट तेनु सेति पई करि नियंतु
we will go together in our journey आरंभ करिबा आज पेपर सो सी सेम जोटा आम देखुचे सिविल सर्विस मेन्स एग्जामिनेशन 24 रो एटा एग्जाम टा 24 एग्जाम टा एटा तो 24 एग्जाम एटा एवं जनरल स्टडीज पेपर 2 साधारण ज्ञान समय 3 घंटा आज यूजुअल एवं फुल मार्क होची 250 एवं जेंती सेक्शन रे थिला टोटल 17टा क्वेश्चन एवं ए पार्ट रे 12टा क्वेश्चन और बी पार्ट रे 5टा क्वेश्चन ग्रुप ए और 12 और ग्रुप 5 मिसे 17टा क्वेश्चन टोटल अछि बेली कमिशन को कथा राइट एज यूजुअल एग्जैक्ट जहाँ अच्छी रहा कथा रही देखो ग्रुप ए क्वेश्चन रे 10टा करिया पड़िबो जो कि 12टा क्वेश्चन अछि ओके आउ ग्रुप बी रे 5टा क्वेश्चन अछि ग्रुप ए रो 12टा क्वेश्चन रु 10टा करिया पड़िबो तार तो 2टा क्वेश्चन आपण छाड़िया पड़िबो आउ ग्रुप बी रे जो 5टा क्वेश्चन रही से 5टा जाक संपूर्ण आंसर देवा पड़ो ओके तो प्रत्येक क्वेश्चन मूल्य 15 मार्क जोटा कि तुम्हें 250 शब्द भितर ये शब्दर जो लिमिट आप देखुन जो मैंने नुआ देखुवे से भी यहाँ माइंड रखु कि ओपीएससी आउ यूपीएससी एग्जाम रो गोटे मेजर रिक्वायरमेंट है कि आमको गुड इवनिंग कृपा सिंधु विश्वजीत गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू ठीक अच्छे तो आर गोटे बड़ रिक्वायरमेंट है आप जानी कि यहाँ वार्ड लिमिट भितर आमको रहा पड़ो सेटा गोटे माने गोटे इंटे गोटे एबिलिटी ऑल्सो कारण आम लिखिपर किंतु आम ताकू कंसाइज प्रेजेंटेशन करवा प्रिसाइज प्रेजेंटेशन करवा केमिति सब्टल वे रे करवा जोटा कि मु एम्फासाइज करुचे क्लासरूम रे तुम जदि मो पेड क्लास रे केबे जॉइन करिवो ता निश्चित फील करि परिवो कि सर कहउतले कि केमिति गोटे चैप्टर को केमिति गोटे टॉपिक को आम प्रिसाइजली प्रेजेंट करवा शिखिबा सेटा जानिबा दरकार जोटा कि क्लासरूम रे ही होय परिबो ठीक अछि तो एटा अछि एवं क्वेश्चन आरंभ होई प्रथम देख डिस्कस द नेचर एंड प्रॉब्लम ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट एरा मु आंसर राइटिंग बैच रे भी कहिछि कि जेहेतु एबे कोलिशन एरा तो बहुत पिलां को मु इंडिविजुअली गाइडेंस करूछि एवं तांको भी कहिछि कि कोलिशन ऊपर पढ़ एवं हमर क्लासरूम रे एबे मु कोलिशन गवर्नमेंट ऊपर पढौतिली प्राइम मिनिस्टर रोल गोटे बैच हमर प्रतिष्ठा बैच रे तो दैट इज एडवांटेज प्राइम मिनिस्टर पढ़ेला बेले कोलिशन गवर्नमेंट को पढ़ेवा दरकार जदि पर्सपेक्टिव टा जने जान नथिबो कारण आमे एबे देखियो पड़ो एबे प्राइम मिनिस्टर जे अछंती ही इज लीडिंग ए कोलिशन गवर्नमेंट नेशनल डेमोक्रेटिक एलियंस तेनु ऑब्वियसली क्वेश्चन आमे करि परिबा तेनु करंट रिलेटेड स्टैटिक सेटा होची वर्तमान रो ट्रेंड सेटा को आपन मान धरे पड़ो तो कोलिशन गवर्नमेंट रो प्रोस और कॉन्स कहितला प्रॉब्लम्स कौन एंड चैलेंजेस ऑफ कोलिशन पॉलिटिक्स इंस्टेबिलिटी गोटे चैलेंज हो पारे लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन गोटे चैलेंज हो पारे डिले इन पॉलिसी मेकिंग गोटे चैलेंज हो पारे आउ लैक ऑफ कंसेंसस गोटे चैलेंज हो पारे देयर आर लॉट ऑफ चैलेंजेस कोलिशन गवर्नमेंट तेणु यहाँ जड़े एक्सपेक्ट करिथिबो तो यहाँ गोटे बढ़िया क्वेश्चन थिला डिस्कस कोलिशन जो एनडीए है नेशनल डेमोक्रेटिक एलियंस और इंडी जोटा अच्छी इंडी ना कौन इंडी एलियंस जो इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक इनक्लूसिव एलियंस जोटा अच्छी तो सेगुरा सब कोलिशन बर्तमान ट्रेंड होची कोलिशन रो सिंगल पार्टी एरा ऑलरेडी that era has come to an end after Congress and in between certain times BJP majority आनी थिले पुणी से बर्तमान से कोलिशन ट्रेंड पाखापाखि फ्रॉम द डॉन ऑफ दिस सेंचुरी माने 2000 रु एपर्यंत आम देश रे प्राय कोलिशन शासन चलछि तेणु ए क्वेश्चन टा आम एक्सपेक्ट करवा जे सिविल सर्वेंट सिविल सर्विस एस्पिरेंट हिसाब से गोटे साधारण कथा एटा को हम देखिया दरकार तेणु ट्रेंड बेस्ड प्रिपरेशन जो आम कहूचे सेटा क्वेश्चन रु मिलूँ तेणु यहाँ बढ़िया अच्छे तापर तो जहाँ आज यूजुअल तुम्हें जानती हो स्पेशल इंटेंसिव रिविजन जोटा बिहार रे कंप्लीट है यूपी एंड अदर स्टेट मानक करा जोटा चैलेंज भी होती तो से डायरेक्ट पचार इलेक्टोरल रूल्स इज ए स्ट्रैटेजिक exercise by the Election Commission of India examine this statement in the context of significance and challenges. So এটা गोटे बड़ रही एसआईआर रो जो जेहेतु पर्सपेक्टिव एवं नुआ थिला तेणु जो आम कहूचे कौन स्पेशल इंटेंसिव रिविजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स पर्पज होची टू एलिमिनेट द डेड वोटर्स बा द आउटडेटेड वोटर्स दोज हु आर ऑलरेडी डेड एंड मेक द इलेक्टोरल रोल more representative in nature because democracy is based upon true representation. Therefore there is a need for a revision
special intensive revision of electoral laws by visiting door to door and asking people and investigating whether or identifying them whether they're living or not, and removing the dead voters, the extinct voters, those who have already been dead, तो तांकु ये करी गोटे स्पेशल इंटेंसिव इलेक्टोरल रोल तैयारी करिबा बा गोटे भोटर तालिका तैयारी करिबा जा फल ट्रू रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट तैयारी हेबो एवं ट्रू रिप्रेजेंटेशन आसीबो। तो से ऊपर निश्चित भाव में क्वेश्चन समस्त एक्सपेक्ट करथिबे जो माने एस्पिरेंट अछथि, सो दैट इज एन एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, नॉट एन अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन। इटा अच्छी गोटे प्रेसिडेंशियल रेफरेंस, एटा भी एक्सपेक्टेड, एटा मु कहिछि कि जेतु जो हमर तमिलनाडु वर्सेस तमिलनाडु गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस गवर्नर ऑफ तमिलनाडु केस जो हेतला, गवर्नर ऑफ तमिलनाडु केस जो हेतला 2025 रे जो सुप्रीम कोर्ट कहितले कि देयर शुड बी ए लिमिट ऑन द प्रेसिडेंशियल एंड गवर्नर्स भोटो, गवर्नर और प्रेसिडेंट भेटो उपर जो 3 मास मैक्सिमम टाइम लिमिट रखिथिले तारी उपरे बेस करिकी प्रेसिडेंट माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वो आर्टिकल 143 अंडर रे गोटे रेफरेंस मागिथिले कि एग्जीक्यूटिव कोन बा एग्जीक्यूटिव रो पावर उपरे जुडिशियरी रेस्ट्रिक्शन लगेई पारिबो कि, इज इट अप्रोप्रिएट, डज नॉट इट वायोलेट सेपरेशन ऑफ पावर। तो से क्वेश्चन रो आंसर दवाई 143 अंडर रेफरेंस देते आप जानी कि आर्टिकल धारा 143 अंडर यहाँ अच्छी कि जितेबाला राष्ट्रपति कौन सांविधानिक दुविधारे पड़ती, व्हेन प्रेसिडेंट इज फाउंड हरसेल्फ और हिमसेल्फ टू बी इन ए कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस, he or she may refer the matter to the Supreme Court of India for advice, and 143 is therefore advisory jurisdiction of the Supreme Court. And ये जो पचारची what is presidential reference, what are its nature and objectives, discuss the views of the Supreme Court on recent presidential reference। तो माने ये जो recent presidential reference रे जो Supreme Court कहते कि executive has autonomy and discretion to decide what it should do and what it should not do. Judiciary cannot put restriction on the autonomy or the discretion of the executive, as it is going to violate the principle of separation of principle, which is a cardinal characteristic of democracy। तो डेमोक्रेसी रे विभाजन, क्षमता विभाजन होची गोटे मूल नीति, तेणु ये मूल नीति को केबे भी भायोलेट करा जिबा उचित नुह बोली मान्यवर सुप्रीम कोर्ट एबे कहिसेंती नेक्स्ट बेंच। जदियो सेही मान्यवर सुप्रीम कोर्ट कहितले कि राष्ट्रपतिंकर प्रेसिडेंशियल भेटो उपरे बा गवर्नर भेटो जो स्टेट बिल उपरे तांकर मैक्सिमम 3 मास रो जो रहिबो टाइम अवधि, जदियो मान्यवर राष्ट्र सुप्रीम कोर्ट रो जने बेंच कहितले, किंतु जस्टिस सूर्यकांत जो मान्यवर मुख्य विचारपति बेंच सेटा को आग्रह करी एवं कहिसेंती कि एग्जीक्यूटिव भेटोरे जुडिशियरी कोनोसी रेस्ट्रिक्शन लगेई पारिबो नाही, बिकज ताहा क्षमता विभाजन बा प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन जोटा गोटे कार्डिनल कैरेक्टरिस्टिक बा गोटे मौलिक वैशिष्ट गणतंत्र ताकू उल्लंघन करिवो। सो दैट इज ओके 143 टा कोन एडवाइजरी नेचर, एवं एठी कहि दउची कि 143 अंडर रे राष्ट्रपति दीटा मैटर उपरे एडवाइस मागी थांती, गोटे हला कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल मैटर्स, आ गोटे any matter before the enactment by enforcement of the constitution। constitution enforcement पूर्वरु प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ उपरे सुप्रीम कोर्ट एडवाइस देवा पई बाध्य होइतांती एवं कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल मैटर्स उपरे सुप्रीम कोर्ट मे और मे नॉट गिव एडवाइस, किंतु ये जो एडवाइस tendered by the Supreme Court is not binding upon the executive or the president। That is what you have to write, that's simple। that's a word द गोटे पेज 2 पेज रे आराम से लिखी जीवो आर्टिकल करी, ठीक है। एटा बढ़िया क्वेश्चन थिला तो आप मन समस्त लिखथिबे। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया's initiative to democratize training process and address the issues in existing civil service system, discuss the statement in the light of कर्मयोगी model। एटा हमर आंसर राइटिंग बैच रा में करिছে कर्मयोगी मॉडल जो कैपेसिटी बिल्डिंग इन द वेक ऑफ टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, technological change। The civil servant should not be resistant to change, they should adapt themselves। so এটা ऑनलाइन जो आई गॉट अछि नै कि इंटर गवर्नमेंटल ऑनलाइन ट्रेनिंग
जो अच्छी आईगट कर्मयोगी प्लाटफर्म अच्छी से सिविल सर्वेंट माने जो आमर कौन कौचे एटा आईगट को लिखा हम आईगट प्लाटफर्म कर्मयोगी प्लाटफर्म ठीक है ये दरकार कैपेसिटी बिल्डिंग अपडेट एनीवेयर एनी टाइम ट्रेनिंग यू नीड टू अपग्रेड इट सो आईगट कर्मयोगी प्लाटफर्म जो गोटे मॉडल तो यहाँ इन द इट इज वेरी रेलिवेंट इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट ऑफ टाइम बिकॉज ऑफ फास्टर एंड क्विकर डेवलपमेंट इन टेक्नोलॉजी एंड टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस द सिविल सर्वेंट्स have themselves to cope with this changing environment. They should not be resistant to status. They should not be resistant to change. They should not maintain status quo. तो यहाँ से कराई एनी टाइम एनीवेयर ट्रेनिंग तो से आईगट कर्मयोगी मॉडल रा कही आम आंसर राइटिंग बैच को सहित कथाई जो मैंने आंसर राइटिंग नहीं तो दे मस्ट हैव रिटन दिस आई होप दिस ओके नेक्स्ट क्वेश्चन थिला एटा नेक्स्ट क्वेश्चन थिला आपन मन देखि पड़तिबे कि एनवायरमेंटल जस्टिस इन इंडिया इज फिजिबल थ्रू नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एग्जामिन द स्टेटमेंट इन द फ्रेमवर्क ऑफ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ऑब्वियसली कारण एटा देखो ए जो क्वेश्चन गुरा हमें कहूचे कोन एटा तुमको को बही रे कहि कहि नथिबो एटा तुमको को तुम नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल पढ़िथिबो किंतु नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल रो ए डायरेक्शन ता तुम तो बही रे लिखि नथिबो जोटा कि तुमको थिंकिंग एबिलिटी को स्विच ऑन करिया पड़िबो एवं से समय तुमको भाविया पड़ो जो मुझे भावुची गोटे एक्सपीरियंस टीचर से रोल थाए नॉट जस्ट मियरली मेकानिकल टीचिंग पीपीटी देखे पढ़े दबा कि बही देखी पढ़ी दबा डाकी दबा दैट कैन बी डन बाय एनीवन किंतु थिंकिंग एबिलिटी डेभलप करके ताको बुझेबा एटा गोटे बड़ जिनस थाए तेणु नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल रो स्टेटमेंट इन द एनवायरमेंटल जस्टिस इज जस्ट इन फिजिबल थ्रू नेशनल ग्रीन व्हाई फर्स्ट you have to define what is environmental justice. Environmental justice means development in sync with environment. Development must be pursued. We cannot avoid development, but development in sync with development in sync with SYNC with environment. It a bada jinsa. Development in sync with environment. Development led environment. Environment led development. We have to promote environment led development हवा दरकार बर्तमान development led environment यही परिबनी development is eating into the environment. The day will come we are facing top issues of climate change, global warming. First paper पढ़ी already global warming. It is a top issue. The mankind is fighting the greatest battle ever. No need to fight against Pakistan, no need to fight against America, fighting against Vietnam. There is no need for world war. Because the world is already fighting a war. Global warming, climate change, which is going to put or keep bring the world into its own grip and destroy it. तो सत्य environmental justice को environmental justice माने कौन? Whatever development work to be pursued, it must take environment into attention. It should not. Development should not take place at the cost of environment. Even the tiniest of environment, even the local environment, regional environment must be given due importance. There is environmental impact assessment in which public hearing is made, but there was no authoritative legal body to enforce. In the year 2010, National Green Tribunal Act was enacted, under which National Green Tribunal has been established as a statutory body and it functions as the apex adjudicative body in matters related to environmental protection. It is headed by a former judge of Supreme Court and headed as different branches. Principal bench is located in New Delhi and it has adjudicating authority and substantial authority to decide whether a project should be allowed or a project should not be allowed. In case of POSCO in Odisha, it was
not allowed because of NGT's interference. So NGT is saving the environment in many areas and it is playing a crucial role. So এটা তুমি লিখি পারিও তো সেটা ওটা ଥିଲା তারপরে হোয়াট নেক্সট কোশ্চিন 6 নম্বর what structural challenges are required to be addressed to achieve Vikasit Odisha for Vikasit Bharat as the vision document of the government. So এটা আমি যে কହୁଛे जो Vikasit Odisha और Viksit Odisha और Viksit गांव এটা ମୁଁ କହିଛି ବି ବହୁତ ସମୟରେ विकसित ओडिशा और विकसित गांव सॉरी विकसित गांव ये जो 2036 रो अछि 2036 रो जो अछि सेटा एनलाइटन भी जो फोकस एरिया अच्छी 9टा फोकस एरिया इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट एजुकेशनल डेवलपमेंट ये जो फोकस एरिया अच्छी ताकू लिखिया पड़ो तो सीटा ओडिशा रिलेटेड अच्छी ऑब्वियसली सब पेपर रे ओडिशा रिलेटेड एबे आसुची तो ओडिशा स्पेसिफिक रे भी रखुछि हला तापर अच्छी देखो कि जोटा अच्छी हमरा the role of finance commission in upholding fiscal federalism is important. Critically analyze, discuss briefly the terms of reference on 16 finance commission. 16 finance commission term ekata kuhaichi. So ebong fiscal federation re kemti na siti function of finance commission lekhe padibo. It determines the distribution of net tax proceeds between the central and states. Tapare it determines the grants in aid and also mane kona jo devolution जो vertical devolution or horizontal devolution it also decides taking many factors into consideration giving importance to weaker states and underdeveloped states so that is how it keeps balance nahi that is how it is keeping balance of federal relations जो vertical devolution ଆଉ ଆମର जो horizontal devolution करूची विभिन्न फैक्टर इनकम डेमोग्राफी डेवलपमेंट पॉपुलेशन ग्रोथ एगुरा सब जो कंसीडर करी पैसा दउची बांटिया कथा कहूची तो सेटा गोटे बड़ फैक्टर हाँ आउ स्पेशल कैटेगरी स्टेटस हैज बीन डिनाइड बाय फाइनेंस कमिशन 14 फाइनेंस कमिशन इट इज लीडिंग टू 41% ऑफ द डिवोल्यूशन शुड बी अलाउड टू द स्टेट्स सो दैट इज हाउ इट इज अपहोल्डिंग द फिस्कल फेडरलिज्म striking fiscal federal balance in the country बाकी 16 फाइनेंस कमिशन रेफरेंस गुरा लिखा पड़ो ठीक है इजी थिला जो माने पढुथि से माने एटा करथि एवं आज यूजुअल एटा मु बहुत समय कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी कथा कहिछि लास्ट समय एथिक्स पेपर आस्तला एबे एटा आछि हमर आंसर राइटिंग बैच एटा मु पूरा लिखिछि बैचटा कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी इज नॉट ए मैच्योर सेंटिमेंट इट हैज टू बी कल्टिवेटेड व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी vis-a-vis social morality in Indian social context discuss the scope and purpose discuss a landmark judgment are the some quote on constitutional so constitutional morality kono na strict adherence to constitutional values and principles by the government by the institutions by the people it means going beyond the literal text of the constitution adherence strict real adherence the constitutional principles and values should be implemented in letter and spirit by one and all associated with it the government the stakeholders the people the institutions everything समस्ते संवैधानिक नीति और आदर्श को अक्षर अक्षर पालन करिबाटा होची संवैधानिक नैतिकता एवं constitutional morality is not social morality constitutional morality may differ from social morality although certain social morality may be found inscribed in the constitution but social morality may differ from constitutional for example our society does not permit intersex homosex marriage but under constitutional morality which maintains that homosex marriage and intersex marriage should be allowed in Navtesh Singh case the Johar case 2018 re supreme court legalized the intersex marriage देखिए बेटा करियो निश्चित भाव में निश्चय थैंक यू फॉर योर सजेशन कृपा सिंधु श्योर आई विल ट्राई ओके सो ये देखो बुझी पार्छ तो सोशल मोरालिटी माने कौन धर जो आम भावुचु कि जो साबरीमाला टेम्पल जो केस होता साबरीमाला केरल रो से केस रे आमे कहूचु कि नहीं जेहेतु धर्म अनुसार वोमेन माने 15 to 55 एज ग्रुप रो वोमेन माने से मंदिर को जीवा कथा न से अपवित्र हो जिवो मेंस्ट्रुएटिंग स्टेज रे वोमेन माने गले मंदिर अपवित्र हो जिवो एंड दैट हैज बीन एन एज ओल्ड बिलीफ इन केरल अकॉर्डिंग टू द रिलीजन तेणु किसी लोक निश्चित भाव में सामाजिक स्तर लोक भावुं कि यहाँ ठीक कथा नु किंतु सुप्रीम कोर्ट कहले कौन
कि जदि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी आम देखा कि राइट टू इक्वालिटी ये भायोलेट हो कारण मेन जाऊँ वोमेन जाऊना पुणी प्रत्येक किसी कैटेगोरी वोमेन जाऊँ किसी कैटेगोरी वोमेन जाऊँ तमें कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 14 भायोलेट हो तेणु दे शुड बी अलाउड इन सबरीमाला केस 2000 वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 रे सुप्रीम कोर्ट एटा कहछन तो एटा दे दो ठीक अछि तेणु सोशल मोरालिटी मीन्स इंटरसेक्स मैरिज और वुमेन एंट्री इन टेम्पल आर taken in a very different manner. For example, in our society even today, intercaste marriage is not permitted, but under constitutional morality it is permitted. As it gives freedom to choose. 21 right to life रे तुमे तुमर पार्टनर चूज करि परियो. Right to marriage has been declared a fundamental right. Under that right to choose your partner is a fundamental right under Article 21. So that is constitutional morality. Then social morality may differ or be synonymous with constitutional morality at a certain point of time. तापरे तुम्हें नवतेज सिंह जोहर केस आउ सबरीमाला केस आउ गोटे दुटा रिलीजन बहुत सारा दे दो बस गला ठीक अच्छे पाराफ्रेजिंग करवा दरकार माने खाली खाली यूट्यूब सेशन देखनी सार पुळे गपुचंदी मु शुणी सेटा नै तुमरो नेक्स्ट मूव रे तुमे कोन करबो सेटा भाबो एवं से अनुसार माइंड को ट्रेन करू था कि केमती लेखा हो से जहाँ पचारछि से लिखिबो इज नॉट ए नेचुरल सेंटिमेंट माने कोन इट इज नॉट नेचुरल वी हैव टू कल्टिवेट इट अंबेडकर कहितला एटा जॉर्ज ग्रोट ब्रिटिश क्लासिसिस्ट जॉर्ज ग्रोट कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को कॉइन करथिले किंतु अंबेडकर कहितले कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी इज नॉट ए नेचुरल सेंटिमेंट इट हैज टू बी कल्टिवेटेड inculcated in us we have to understand it is not very easy to have constitutional morality तन सेटा से नेचुरल सेंटिमेंट नुह तापर it has to be cultivated एटा लिखिछि अंबेडकर कहिसंती एटा and what is constitutional morality with a social morality means social values or social opinion based values which are accepted by majority of the society. For example, intersex homosex marriage is not permissible. That is a social value. But constitutional morality is what is permitted or inscribed or implied in the constitution. It is strict adherence to constitutional values, principles like justice, equality, liberty, fraternity, integrity and dignity of individuals. ठीक है तापर जजमेंट इटा दे दिलो कोन ठीक तो काम 15 मार्क ठीक है तापर व्हाई दिस ऑफिस ऑफ कंट्रोलर ऑडिटर जनरल कंसीडर्ड ए वाइटल फॉर आंसरिंग इफेक्टिव गवर्नेंस व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स ही आंसर बहुत इजी क्वेश्चन थिला एटा कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स जो आर्टिकल 148 रे जो कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल 148 रे जो अछंती हमर के कंट्रोलर ऑडिटर जनरल आर्टिकल 149 रे तंकर सेफगार्ड सब अछि तो कंट्रोलर ऑडिटर जनरल एक्ट 1971 रे भी तंकर सेफगार्ड दिया जाइछि एटी सेफगार्ड माने कोन ही holds by he has security of tenure he cannot be removed by president arbitrarily he can be removed by in the way a supreme court judge is removed and he holds security of tenure his salaries and expenses are charged upon the consolidated fund of India okay and he is barred from taking other employment after retirement so these are what constitute constitutional safeguards एवं से आगे पचारछि कोन जे केमिति ensuring better governance and it ensures parsimony by economy in the expenditure of public money it ensures that public money is spent in a proper way and effective way for the development of the country तो सेटा लिखिबो ठीक है जेरा थिला का करो तापर देखो इटा उडे पकैछि व्हाट हैज बीन द डेवलपमेंट इंडेक्स ऑफ वुमेन इन ओडिशा व्हाट हैव बीन द मोस्ट सक्सेसफुल स्कीम्स इंप्लीमेंटेड इन द रिसेंट years फॉर वेलफेयर ऑफ वुमेन इन द स्टेट्स डेवलपमेंट इंडेक्स रे माने परसेंटेज ऑफ वुमेन इन सर्विस परसेंटेज ऑफ वुमेन इन वर्क फोर्स परसेंटेज ऑफ वुमेन इन कॉर्पोरेट सेक्टर बा जहाँ जहाँ सब एडमिनिस्ट्रेशन रे इटा उठे एवं जेतु जो स्कीम गुरा अछि धर हमर सुभद्रा स्कीम हैला येला एगुरा सब लिखिकी दो पड़ो तो इटा ओवरऑल जने ओडिशा पर प्रिपेयर होचे माने सेटा लिखिबो ठीक अछि तापर डिस्कस द कॉज एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ बॉन्डेड लेबर इन ओडिशा डिस्कस द स्टेप्स टेकन बाय ओडिशा गवर्नमेंट इन टैकलिंग प्रॉब्लम्स व्हाट आर द bottlenecks in the implementation
ओके बंडेड लेबर जो जो एक्ट थी गोटी श्रमिक समस्या कारण परिणाम पर आलोचना करे दूर करी ओडिशा सरकार द्वारा निया लेबर लॉ ओडिशा लेबर एक्ट जोटा 2023 ना 24 जो आमेंड होती तो से बंडेड लेबर जोटा अच्छी आमर कौन आर्टिकल 23 रे ताकू टे साइड करदेव से ओके दैट इज 11 12 हूँ डिस्कस द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ स्टेट इलेक्शन कमिशन यहाँ इजिली कारण यहाँ पंचायत राज पढ़ला बेले यहाँ बहुत सारा माने आम पढ़ू यहाँ आर्टिकल 243 के आउ 243 टी जो से पार्ट रे अच्छी तो यहाँ इलेक्शन कमिशन इज ए इंडिपेंडेंट बॉडी एवं इट कंडक्ट्स इलेक्शन टू कौन पंचायत और म्युनिसिपालिटीज एंड यहाँ बहुत इजी क्वेश्चन स्टैटिक क्वेश्चन यहाँ गोटे स्टैटिक क्वेश्चन तो यहाँ पंचायत पढ़ला बेले आम निश्चित भाव में देखू यहाँ तो यहाँ हो पार नहीं कि स्टैटिक क्वेश्चन तो यहाँ थिला हाँ हाँ यस यस तो ये लिखे ठीक है जो विभिन्न भेराइटी एंगल यहाँ आम कर 243 तो यहाँ अच्छी यहाँ गला कौन 13 तापर ग्रुप बी देख ग्रुप बी रे 300 शब्द भितर अच्छी 20 मार्क क्वेश्चन एक्सप्लेन द रिवंस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन व्हिच अंडरलाइन द फ्रेमवर्क बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली व्हाट आर द फैक्टर्स लेड टू द असेंबली मेंबर्स टू हैव ए फेडरल सच ए फेडरल डिजाइन जो क्वासी फेडरल डिजाइन तेणु क्वासी फेडरल डिजाइन रे तुमको लिखा पड़ो कौन ना बेसिकली यूनिटरी प्रोविजन्स गुरा फेडरल प्रोविजन लिखिदेल फेडरल प्रोविजन्स है तापरे बेसी हाइलाइट करिवो यूनिटरी प्रोविजन्स कौन थिला तमाने स्ट्रॉन्ग सेंटर तापरे रेसिडुअरी पावर वेस्टेड विथ द पार्लियामेंट बा सेंटर रेसिडुअरी पावर ऑफ लेजिस्लेशन एंड टैक्सेशन आर्टिकल 248 appointment of governor by the center all India services तापरे डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर इन द हैंड ऑफ सेंटर तो एगुरा सब कौन क्वासी फेडरल नेचर वी प्रोवाइडेड ए स्ट्रॉन्ग सेंटर कंसीडरिंग नेशनल सिक्योरिटी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी तो सहीटा आराम से लिखा हो जोटा तुम्हें यूनिटरी प्रोविजन जो कैरेक्टरिस्टिक गुरा अच्छी रेसिडुअरी पावर वेस्टेड इन द सेंटर अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर बाय द सेंटर प्रोविजन ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज रेसिडुअरी पावर ऑफ लेजिस्लेशन तापरे प्लेनरी पावर ऑफ द पार्लियामेंट ओवर यूनियन लिस्ट पार्लियामेंट कैन लेजिस्लेट ऑन द स्टेट लिस्ट इन सर्टन सर्कमस्टांसेस एगुरा सब मेजर जिनस अच्छी तेणु यहाँ आराम से यहाँ इजी क्वेश्चन थिला यहाँ तापरे बेसिकली हूँ कौन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कॉल्ड लिमिटेड एंड रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एक्सप्लेन द डॉक्ट्रिन ऑफ चेक्स एंड बैलेंस while mentioning the relevant constitutional provisions applicable to India's constitutional democracy. Limited and responsible government it is separation of power जो अच्छी separation of power रे कौन जोटा अच्छी धर आर्टिकल 121 धर कि पार्लियामेंट रो प्रोसीडिंग्स रे ये इंटरफेयर करि परिबनी सेंटी कोर्ट रो प्रोसीडिंग्स रे पार्लियामेंट करि परिबनी कि जोटा अच्छी धर मिनिस्टेरियल एडवाइस जो अच्छी आर्टिकल 74 रे अच्छी जो आर्टिकल 74 रे अच्छी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर शाल टेंडर एड एंड एडवाइस टू द प्रेसिडेंट एंड प्रेसिडेंट शाल एक्ट इन अकॉर्डेंस विथ सच एडवाइस 42nd अमेंडमेंट रे से एड एंड एडवाइस को बाइंडिंग कराई एवं 74 रो आर्टिकल 2 जो अच्छी 74 आर्टिकल 121 एगुरा सब दे हेबो सेपरेशन ऑफ पावर तो चेक्स एंड बैलेंस रोच एंड सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट भी तुम्हें दे पारियो जो देइछन सुप्रीम कोर्ट एबे एग्जीक्यूटिव डोमिनेंस को तेणु यहाँ हूँ कौन गोटे लिमिटेड गवर्नमेंट किए कौन नो ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट बिकम्स ऑटोनोमस बा ऑटोक्रेट समस्ते निज निज स्पीयर एवरी ऑर्गन मस्ट फंक्शन विदिन द कॉन्स्टिट्यूशनली प्रेस्क्राइब्ड स्पीयर विदिन द कॉन्स्टिट्यूशनली प्रेस्क्राइब्ड स्पीयर. So therefore there are various explicit provision in the constitution like article 74 clause 2 रे कुहाई कि ministerial advice cannot be judicially reviewed. तार तो judiciary ministerial advice को review करि परिबो नाही. तामाने it establishes separation of power. Are you getting my point or not? It establishes separation of power. सेमती आर्टिकल 121 जदि आम देखा कहुई कि पार्लियामेंटरी प्रोसीडिंग्स रे कोर्ट व्हाटएवर इज बीइंग डन इनसाइड द पार्लियामेंट ता कोर्ट से अननेसेसरी इंटरफेरेंस करि परिबन तेणु दैट इज सेपरेशन
but there is still a balance, checks and balance. Executive is a member of parliament and executive is controlled by parliament through various devices. So in this way, there is a typical arrangement in Indian political system which promotes limited and responsible government. तो एगुरा मिसई मासे लेखा एगुरा सब एनालिटिकल क्वेश्चन एगुरा तुम्हें जहाँ भी दबो appropriate provision 4-5टा दबो, the examiner will be happy and it will award you good marks. Okay, so main है कौन वर्तमान static तो गोटे क्वेश्चन देखिले से स्टेट इलेक्शन कमिशन बस सेतिकी तो रहिला ना तापरे आउ नाही तापरे डिस्कस द चैलेंज ऑफ जो 4FS टा लिखिबटी 4FS कौन जोटा रहिला तुमर कौन रे फंक्शन आउ फंक्शनरीज मु आगो लिखि दिली ता आगो फंड्स लेखा हो फंक्शनरीज आउ गोटे ला तुमर कौन फाइनेंस फंड्स फंक्शंस फंक्शनरीज फंड्स आउ गोटे ला फ्रेमवर्क ये चार्टा लिखिदेल एथिरे तांकर प्रॉब्लम रही तापर कैपेसिटी बिल्डिंग रे प्रॉब्लम रही कर्मयोगी मॉडल ताको एठी अडॉप्ट करिया दरकार कैपेसिटी बिल्डिंग माने पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव मानकर कैपेसिटी बिल्ड होनी पॉलिटिकल एजुकेशन नाही तापर सरपंचपति सिंड्रोम बस ये 5-6 लिखिले ही प्रॉब्लम्स ऑफ पंचायत राज despite implementation of 73rd with representation to Gram Panchayat in Odisha suggest doable reforms in both general terms and specific context of Odisha. Doable माने कौन जति practicable तमे suggestion दबो devolution proper devolution Odisha has not yet devolved much adequate financial and legislative power to panchayats. It has not given more autonomy to Gram Sabhas. Should be given. से डरे दूचे ओडिशा कंटेस्ट रे कौन करिवो या तो करिवो कोन अमेंडमेंट करियो पंचायत राज एक्ट को न मोर पावर दबो डिवोल्यूशन दबो का ग्राम सभा को मोर डिवोल्यूशन करिवो जो पंचायत डिवोल्यूशन इंडेक्स जो अछि पंचायत डिवोल्यूशन इंडेक्स रे जे जोटा एबे बाहर को 23 रे ओडिशा इज लैगिंग बिहाइंड अदर स्टेट्स Odisha is lagging behind in terms of devolution under 11th schedule. Are you getting my point or not? So that is what to be written. Nothing else. Are you getting my point or not? So that perspective has to be maintained. And these are the problems first to be highlighted. ये problem को highlight करियो पड़िबो. एवं तापरे तुमे से कहिछि कोन doable reforms आनिबो. Doable reforms. Promoting political education among women, training for women representatives, periodical training, appropriate devolution, appropriate financial autonomy, infrastructure building for panchayats in remote areas, connectivity in the unconnected areas. तापरे putting restriction on politicization of panchayat elections that can be done which is feasible doable माने कौन जोटा feasible हमें तो अधिक autonomy देई परिबन ना तो जति practical taxation दिया जाऊ तो सेटा कहिबो तुम तो सेटा हला कथा तो सेटा ही परिबो ठीक अछि तापरे लास्ट क्वेश्चन दीटा क्वेश्चन examine the signification of caste transfer in India एटा तुम देखते एटा caste transfer जो bring negative and positive effects भारत में नगद टंका हस्तांतर योजनार गुरुत्व ये करो जो डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर नो कैश ट्रांसफर या सकारात्मक नकारात्मक करप्शन हम ये हम एगुरा पर जहाँ लिखब तापर एटी ई गवर्नेंस डिस्पाइट मेनी ई गवर्नेंस प्रैक्टिसेस डिजिटल एक्सक्लूजन इज ए रियलिटी depriving many from the fruits of governance. Explain the causes and consequences of digital execution and people affected by it. What remedial measures are required to address the problem? तो माने digital divide केमती अब digital divide तो माने addressing digital divide तो by promoting digital education और digital infrastructure build करेगा
inclusive digital infrastructure, disabled friendly करिया दरकार एवं डिजिटल जो एजुकेशन प्रमोट करिया दरकार एटा गोटे कैंपेन करिया दरकार अवेयरनेस इन द सोसाइटी तैयारी करिया दरकार तो एटा ई गवर्नेंस ऊपर आर्थर को मॉडल्स पकेइतला मु कहितली कि एथरा मॉडल्स पके जेथरा आउटे कोन पके कारण दीज आर द मोस्ट एरियाज एटा मोस्ट एरिया जोटा कि हमें देखिबा दरकार ठीक अछि तो आज आई हम कन्विंस्ड कि प्रैक्टिकली जदि हमें देखिबा कि हमें देखुचे कि बेसिकली तो करंट डेवलपमेंट जोटा देखुचे कोन 2025 रो जनवरी परटू हमें जदि देखिबा ए बेस रे से वर्षे बैकग्राउंड रे क्वेश्चन आनुछंती प्राय प्राय माने 70-80% क्वेश्चन आर बेस्ड अपॉन करंट अफेयर्स डेवलपमेंट सो करंट डेवलपमेंट गुरा देख ता सहित स्टैटिक को लिंक कर जंती प्रेसिडेंशियल रेफरेंस देले तमिलनाडु केस रे तो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस रो गुरुत्व कौन पचारला ठीक अछि सबरीमाला केस हैला तादरु एलिमिनेट कला कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी कौन right so these are the areas where you have to work on so okay thank you very much for being with me and please do your preparation in these lines कारण जो लाइन रे मु कहली जेमते हम डिस्कशन करछे सही लाइन रे प्रिपरेशन होतु खाली गदा गदा बही पढ़ी गदा गदा मटेरियल पढ़ी से सब किछ लाभ नाही बेसिकली जहाँ भी पढ़ुछंती निजर थिंकिंग एबिलिटी भितर ताको डेवलप करंतु कोन प्रोस कॉन्स व्हाट हाउ व्हाई एटा बेसी स्ट्रेस दियंतु एवं जदि गाइडेंस आवश्यक होउची ताले Adda247 OPSC को बैच रे जॉइन करंतु वी शैल मीट टुगेदर डिस्कस टुगेदर एंड build a framework of our success. Thank you very much for being with me and thanks thanks especially to those who are in chats Durga and basically Durga is very active. Thank you Durga and Krupa Nidhi, yes Krupa Sindhu, Vishwajit, all are great. Okay, thank you very much. Thank you.